Assalamu alaikum everyone. Today we have a very special power couple with us from the Pakistani startup ecosystem. We've got Meenah and Omar with us. Thank you so much for joining us. Thank you for inviting us. Meenah and Omar are here today celebrating Metric Day. Ab Metric Day kya hai? Metric kya karta hai? We'll get into that as well. But first off, I'd just like to start off with this question. You two have been associated with the startup ecosystem for more than a decade now. 10 साल पहले I think 90% of Pakistan's population did not know what a startup was or what the startup ecosystem was. So what made you take that plunge into the unknown के हमने कुछ नहीं करना, this is something very new and this is what we want to do. That's easy for me to answer because Meenah was the one that made me take that plunge. इसने plunge नहीं लिया, मैंने इसको धक्का दिया, full धक्का So दिया. what made Meenah take that plunge is what's relevant here. हाँ, so I think मुझे पाकिस्तान वापस आए हुए तो अभी 10 साल से कम टाइम हुआ है. But उससे पहले even before I left Pakistan, I was working on entrepreneurial ventures. So I started doing business when I was very young, and I realized I enjoyed business. You know, entrepreneurship तो बोलनी भी नहीं आती थी, ठीक है ना. इसको पढ़ते भी हम entrepreneurship ही थे उस टाइम पे, entrepreneurship नहीं बोलते थे हम उस टाइम. तो मगर तो business होता था, business पढ़ा, business किया, बहुत दफ़ा business किया, पैसे लगाए, जलाए, डुबोए, बार बार किया. पर that was my happy place in a lot of ways. So when I went to the US for my MBA, I went specifically to study entrepreneurship. और 2 साल मैंने वहाँ जो लगाए बैप्सन कॉलेज में, तो अगेन वहाँ से मैं बहुत आई थिंक इंस्पायर होके आई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अराउंड दिस. पहले बिजनेस किया हुआ था मगर उसमें रियलाइज़ नहीं किया था क्या गलतियाँ कर रहे थे, मतलब ये सारा कुछ लेके. And then I was very lucky because when I came back to Pakistan, Kulsoom hired me before I came back to Pakistan. We met while I was still in the US and she interviewed me there and she hired me. तो मैं I think 14th को वापस आई थी और 15th को मेरा पहला दिन था I2I में. तो I was very lucky कि in the right place with the right people जो काम कर रहे थे वो बड़े दिल से कर रहे थे. और फिर होता ये मिलालन, of course you've been working with entrepreneurs now for a very long time and you know this, कि ना ये बड़े passionate लोग होते हैं. जब आप डेली के हिसाब से पैशनेट लोगों के साथ काम करते हैं ना, इट इंस्पायर्स पैशन इन यू. आप रोज मोटिवेट होते हैं क्योंकि वो जो लोग होते हैं जिस तरीके से वो वही कश्तियाँ जला के और हर तरीके से मेहनत करके, मतलब वाकई दिल लगा के काम कर रहे होते हैं, वो आपके अंदर भी वही जज्बा जो है वो इंस्पायर करता है. तो मेरे लिए तो वही, मतलब मैंने जब I2I में आई वर्कड एट इन्वेस्ट टू इनोवेट फॉर 3.5 years, ran the accelerator program, worked with hundreds of startups. And I think what really had me going from one day to another was that inspiration and passion that I got, and that's infectious. तो उमर को भी जो मैंने पहली दफ़ा धक्का दिया था, तो मैंने इसको बहला फिसला के मिनते समाजते करके इसको कहा था एक इवेंट मेरे साथ अटेंड कर लो entrepreneurship का. पिचिंग कंपटीशन था वो एक, एंड ही वाज लाइक मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे किसी से बात भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ अपने एक्सेल के पीछे बैठ के काम करना होता है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, ये मेरा काम नहीं है. वो पूरे इसने ड्रामे डाले. And then when I took him, he wouldn't leave. He was sitting there and he's like, oh, इन्होंने ये कहा, इन्होंने अच्छा ऐसे कहा, ये आइडिया अच्छा लग रहा है, ये नहीं, मतलब it's contagious. He just wouldn't leave. And like that was it. The rest is history. And that's the quickest way to learn how to swim. Just toss them in the deep end. धक्का दे दो और बस. ठीक है. So you said your passion started off from the US. So how do you draw a comparison between the Silicon Valley and the incubation space over here? क्योंकि a lot of us incubators, हमारे भी program 6 महीने की incubation है या 6 महीने की फिर acceleration है. Don't you think कि this is a little unfair to the startups? फिर startups भी यही mindset लेके आते हैं. So what would you say to prepare aspiring entrepreneurs या young entrepreneurs कि वो क्या expectations लेके आएं? Because we've seen कि at least in our ecosystem 6 months are not enough to do or die. Yeah, नहीं, absolutely, you're absolutely correct. देखें सिलिकन वैली या यूएस में एक्सेस टू मनी बहुत ईजी था ना. वहाँ पे तो इवन जब मैं गई थी तो इतने स्टूपिड आइडियाज़ को इतने इजीली पैसे मिल रहे थे, आइडिया स्टेज पे बगैर अट्रैक्शन के आपको वहाँ पैसे मिल जाते थे. अब इस साल चेंजेस आ रही हैं क्योंकि ग्लोबली रिसेशन आ रही है, मगर तब तो वो बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन थी. पाकिस्तान में तो जिस वक्त मैं इवन पाकिस्तान वापस आई थी, आई थिंक that would have been उस वक्त 3G 4G आ रहा होगा पाकिस्तान में. I think it recently launched. हाँ,
like it's just मतलब उसके बाद हमने acceleration देखी है, internet penetration हमने उसके बाद देखी है, उसके बाद और बहुत सारे entrepreneurs उससे 3-4 साल पहले से ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे थे जो कि without internet being deployed वो deployable नहीं थी, but they were still building, they were still trying to do something that was different, right? I remember Madiha, who was doing Savari way before like Kareem and Uber came into the market, and she was trying to build something which was for people was like just shocking. कोई किसी की गाड़ी में बैठ के चला जाएगा, ये कैसे होगा? You know, it was just so entrepreneurs. I think at हम DNA level पे we are trying to do something that is different, and a lot of times we're ahead of time. और हम जब ahead of time होते हैं तो हमें मार ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जब हम ahead of time होते हैं तो मार्केट तैयार नहीं होती, और जब हम ahead of time होते हैं तो पैसा तैयार नहीं होता, जो कि again in Pakistan we saw, जैसे आप कह रहे हैं 6 months में क्या हो सकता है, क्योंकि ना मार्केट तैयार है ना हम तैयार हैं. हम यहाँ पे हर कोई फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है. कितने लोग हैं जिन्होंने इससे पहले एग्जिट्स किए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, राइट, और ना पैसा तैयार है. सो इट इज गोइंग टू टेक मोर देन 6 months. हमने आई थिंक पिछले 1-2 साल में ऐसी स्टार्टअप्स को पैसे रेज करते देखा है जो 5-5 साल से काम करी थी. Omar's favorite book being one of them, right? So like these are startups that were operational for 3 years, 4 years, 5 years. Baby Planet, another one of our portfolio companies. तब जाके उन्होंने अपना पहला राउंड रेस किया. So startups need to be patient in They need to be prepared for like some tough times, and just because of how early everything in our market is. And what do you think? So हमारे यहाँ अक्सर स्टार्टअप्स का ये होता है कि जी मेरे पास आइडिया आया, I'll take it to an investor, I'll take it to a VC, और वो कहेंगे यार ज़बरदस्त आ जाओ, I'll invest in your idea, take my money, build your business. So how much we know for a fact it's not true, but किस तरह आप स्टार्टअप्स की expectations manage करेंगी कि this is not how it works? How much work actually goes into this? You're actually talking about this earlier as well. How much work, even though you two being VC partners and being from that background, how tough is it to raise investment, और वो सारा का सारा जो आपका scenario build up हो जाता है उसको tackle करना, how hard is it? So I guess it also depends on where the market is. So but अभी even in the context of last year जब बहुत सारे rounds raise हो रहे थे, a lot of founders or a lot of entrepreneurs, hopefuls in Pakistan, वो देखते हैं बहुत बड़े राउंड रेस हो रहे हैं तो सबको पैसे मिल रहे हैं तो हमें भी मिलने चाहिए. And to sort of add to the confusion, I would say there were a couple of startups जो idea stage पे बहुत heavily funded हो गए. तो पर यूजली बाकी मार्केट को वो उन डील्स की इनर वर्किंग्स नहीं पता होती. सो फॉर एग्जांपल देयर आर डील्स जो वीसी ने सोचा ऐसी कोई कंपनी होनी चाहिए, उसने सोचा कौन है जो करेगा, उसको कन्विंस किया तुम करो मैं फंड करूंगा, पर ये बहुत रेयर केसेस होते हैं. But whether it's a bull market, whether it's a bear market, I think in any situation what you need to understand is कि when you're going to fund, एक तो आपका अपना स्टार्टअप है, आपका अपना कोई प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हो. But when you're going to fundraising, you're also selling something. You're selling your company. You're selling shares in your company. So those shares in your company should have some value. वो value आप कैसे indicate करते हो? वो value आप indicate करते हो by showing what you have done before you go to investors, right? तो बहुत सारे यहाँ पे founders उसमें पहुंच जाते हैं, चिकन एंड एग सिचुएशन में आ जाते हैं कि यार पैसे होंगे तो मैं ये आइडिया वैलिडेट करूंगा, और मैं पर वीसीज कहते हैं वैलिडेट करोगे तो हम पैसे देंगे, राइट. तो एक मसला ये भी है कि यहाँ पे द सप्लाई चेन और द वैल्यू चेन पूरी फंडिंग की है नहीं. अगेन यंग इकोसिस्टम, तो अर्ली स्टेज एंजल्स यहाँ पे है नहीं. वो ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव थोड़े इन्वेस्टर्स आपको मिल जाते हैं, पर दैट जस्ट किल्स योर स्टार्टअप इवन इफ यू टेक दैट मनी. तो वो सोफिस्टिकेटेड एंजल अप सिंडिकेट्स कोई बन रहे हैं पर पहले नहीं थे, तो उनके दिमाग में होता है भाई ये नहीं है तो हम वीसी से ही लेंगे. बट दैट इज द हार्ड पार्ट, राइट, एंड that is the part which actually gives a market like Pakistan the potential upside. तो risk reward equation हमेशा एक हद तक बैलेंस होती है. If Pakistan is a risky market, these are the reasons why it is risky. One of the reasons is कि आप वैलिडेशन के लिए जो आपको थोड़ा बहुत रिसोर्सेज चाहिए वो भी नहीं होते आपके पास. तो अगर वो नहीं होते तो आप स्मार्टली कैसे वैलिडेशन लेते हो? And then the reward is because it's hard, not a lot of people will be able to do it. So those who do it will take most of the upside. तो
ये again, it's not like an easy simple answer कि उनको बता दूँ यार ये करें और फिर VCs के पास जाएं. The simple answer is you have to show traction, you have to show proof of concept, market validation. Yeah, what I said will work is actually working, and you can see it in the numbers. And then you move quickly. Yeah. When you see that validation, then you move quickly, and then you try to close that round. And that is like the long answer to this very simple equation that it's really hard to do. That is. And nobody is going to give you money just because you've come up with a great idea. Ideas are a dime a dozen. Ideas तो इतने ज़्यादा होते हैं. हम रोज डिस्कस करते हैं और 3 नए निकल आते हैं ना. आप भी मेरे ख्याल में सोते होगे उठते होगे तो बिलाल के पास 2 नए आइडिया होते होंगे. Execution on the other hand is extremely hard. So again, वही बात है. A lot of startups when they early on come and pitch at the NICs, any of the NICs, they have a very idea-centric approach. They've thought of something because they're students. Another thing that I'd like for you to shed some light on is how much does experience count, right? So a lot of times students, they're fresh graduates, they have a lot of energy, but not a lot of experience, right? So do you think there's a fine balance between being an entrepreneur? A lot of times लोग कहते हैं यार या तो मैंने जॉब करनी है या मैंने entrepreneurship करनी है. So they've drawn a line. How blurry do you think that line is? Because I think even to do a startup, you do need a little bit of an experience, right? So because you've done both. So what is your take on that? I think what you need is professionalism. Yeah. So experience को अगर मैं एक different term use करूँ वो professionalism है. I have met some young people who are extremely professional and extremely disciplined, and I have met some people who have been working for 10 years but are extremely unprofessional and not disciplined at all, right? तो उन्होंने वो जो experience है उसको उस तरह से absorb नहीं किया versus किसी और ने बगैर job experience के भी professionalism को adopt कर लिया. बात ये कि we assume that entrepreneurship does not require that level of professionalism. जब हम corporate में होते हैं तो discipline बड़ा ज़रूरी है वहाँ पे. और actually बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि हमें discipline अच्छा नहीं लगता इसलिए हम entrepreneur बनना चाहते हैं because we get to do what we want. मैं ये कहने वाला था. Not at all. One of the terms that I hate the most, and I know people like this, कि वो business इस वजह से यार नौकरी वोकरी नहीं होती, करेंगे तो अपना business करेंगे. वो भी नहीं करते कभी क्योंकि वो भी टाइम नहीं आता. क्योंकि उसके लिए भी discipline बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Professionalism बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब fund raising तो आप भूल ही जाए ना. उसके लिए तो जो level of professionalism और discipline चाहिए वो that's through the roofs. But even खुद like on a day-to-day basis to grow a company, there are so many things that you need to put in place. So it's almost like एक end पे आप कह रहे हैं you don't want to be professional or disciplined. On the other hand, you are responsible now for being professional and disciplined because if you're not, your company is not going to be. So वो तो multiply हो जाता है मेरे ख्याल में. And even from a investor's perspective, it is true that if a recent graduate with no experience comes to pitch versus someone who has Job experience, yeah. तो फिर they prefer because it's a less, if keeping everything the same, it's less of a risk, right? That person might have done their own businesses, maybe they didn't, maybe they worked in jobs, but they were jobs like even like trusting someone with $1 million. Would you trust a 22-year-old just coming out of college or someone in their mid-30s जिसने pocket money manage किया सिरे से, जिसने थोड़ी सी जिंदगी देख ली है? It is part of the game. So वही बात है. I mean, it's not like to discourage कि कोई early stage या young age पे entrepreneurship ना करे, but don't sort of do it with the attitude कि यार हम इसलिए करें कि इसमें हम पैसे रेज करेंगे और फिर पैसे कमाएंगे. That is the age where you're sort of learning more, whether you're in a job, whether you're an entrepreneur. But age does affect the fundraising sort of chance of founders. So which actually brings me to the point, okay, I think professionalism or experience actually helps you with a vision as well. Yeah. Right. If we look at Metric now, let's talk a little bit about Metric as well. So Metric now in essence is a tech company, right? So there's a technology sort of ठीक-ठाक technology behind it, बल्कि सारा tech based ही है, AI enabled and all of that. But initially it started off as Experts, which was a consultancy, right? So that wasn't a tech company. So again, I think, what do you think is important for startups to have that vision, to put the dots ताकि वो फिर when they take a step back and they can connect the dots later on, right? So a lot of startups, they lack vision. वो कहते हैं यार आज मैंने 2 clients पकड़ लिए, ठीक है, कल की कल देखेंगे, ठीक है, investment के साथ देखेंगे. या even if they go for investments, ठीक है, उन्हें वो कहते हैं जी मुझे $1 million चाहिए.
and when they are asked, "अच्छा क्या करोगे $1 million का?" then they don't have an answer, right? So what do you think? How can young entrepreneurs जो कि now they're just stepping into this ecosystem, वो किस तरह अपना vision जो है रखें कि long term हो, short term goal कैसे set करें? How did you guys manage with metrics and experts? So before like I guess Meenah goes into like how we did it, सबसे पहले तो ये कहूँगा आए incubators में है NIC में है, right? This is the place. So a lot of people वही बात है, they want to do something on their own, which is good. But they don't even know like the basics rules of the game, right? So places like this is where they get quick access and very high quality access to other founders, mentors, people who are running these spaces. उनको बता देंगे यार ये rules हैं, this is what you need to focus on. तो उनकी वो जो learning curve है वो short थोड़ी हो जाती है. They can then learn really fast. वरना अगर वो अपने silos में काम करते रहेंगे और and they'll learn by failing again and again. It'll take longer. There's nothing wrong in learning by failing, but I think बल्कि I think उससे काफ़ी learning होती है. It's just कि वो time ज़्यादा लग जाता है, फिर उनको लगता है उन्होंने time ज़ाया किया और eventually वो फिर इधर ही आते हैं, बस 2-3 साल गुजर गए होते हैं. I think the learning piece that Omar touched upon is actually very critical, right? और उमर ने जो बात की, अगर वो मैं अपने आप पे अप्लाई करूँ तो मैंने भी तो ऐसे ही सीखा ना. When I came back to Pakistan, तो मुझे पाकिस्तान इकोसिस्टम का तो कुछ नहीं पता था. तो मैंने कलसूम से सीखा. मैंने कलसूम के थ्रू जब मैं इनक्यूबेटर्स एक्सेलरेटर्स से मिली, तो every time so when I joined I2I का एक्सेलरेटर स्टार्ट हो रहा था, तो we would take our startups for like all of the mentor meetings. I would take more notes than anybody else in the room. मैंने एक सेशन में 12 पेजेस के नोट्स बनाए हैं, because a lot of it was new information to me and I didn't have a startup but I wanted to learn all of that. So मेरी अपनी learning भी इन सारी interactions में आप लोगों से मिलके, you know, सब incubators accelerators से मिल के हुई. And I think that really opens up the world to you, क्योंकि वो आप मतलब वो जो विजन वाली बात है ना, शायद वो उधर से आती है. शायद मतलब आज से 10 साल पहले अगर मुझे यही आइडिया आया होता और मैं यही काम करने की कोशिश करी होती तो मेरा विजन इतना बड़ा ना होता, क्योंकि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स, मेरी अपनी लिमिटेशंस भी क्लियर ना होती. वर्सेस अभी जब मैंने और उमर ने डिसीजन लिया टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, वी वर वेरी सर्टेन, राइट? हमने जब एक्सपर्ट्स खोला तो एक माइंडसेट के साथ खोला. जब हमारा प्रोडक्ट बना तो हमने रियलाइज किया कि ये लाइफस्टाइल बिजनेस नहीं है. दिस प्रोडक्ट इज अ VC backable product, and that means this. What does it mean to be a VC backable company? There are certain things that come into play. There are some certain pieces that need to be in your DNA as founders and as a startup for you to be VC backable. तो हमें वो क्योंकि पता था, तो हम ये डिसीजन कर सके कि हम किस किस्म की कंपनी बनना चाहते हैं, हम किस किस्म के फाउंडर्स बनना चाहते हैं. तो फॉर अस इट बिकेम अ वेरी डेलिबरेट प्रोसेस, क्योंकि एक तरफ एम्बिशन था जो कि आपको ड्राइव करता है, और हर किसी में वो एम्बिशन भी नहीं होता. बिलाल आपने खुद देखा है, डिफरेंट टाइप्स के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनमें से कुछ जो खुश हैं, ठीक है 2 आज हो गए कल नहीं होगा, वो एक अलग ब्रीड होती है. और वो एक दूसरी ब्रीड होती है जो हमारी तरह की थी, नहीं यार हमने तो चांद पे पहुंचना है और मतलब 2 साल के अंदर पहुंचना है, तो अब फिगर आउट करो कि कैसे पहुंचना है और क्या बनाना है, कैसे उस पर चढ़ना है और कैसे पहुंचेंगे, वहां जाके क्या करेंगे, यू नो. तो वो हम साथ साथ वो करना है. सो एक तो एम्बिशन है, और दूसरी तरफ एंड उमर एंड आई व्हेन वी टॉक अबाउट इट, इट्स आल्सो लाइक वाइडनिंग योर ओन, मतलब उससे आप कह लें लाइक जैसे आपकी स्किन होती है ना, लाइक वो जो आपका अपना एक्सपोजर है, जिसके अंदर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है, वो आप जितनी वाइडन करेंगे, जितनी ओपन अप करेंगे, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, उतनी ज़्यादा लक भी आएगी, उतनी ज़्यादा लर्निंग भी आएगी, और उतना शायद थिंग्स स्टार्ट टू कम टुगेदर. Surface area मेरे ज़हन में सर्कमफ्रेंस आ रहा था. Circumference is not the right thing. What's the right words? Surface area. Yeah. Coming to metric, metric क्या है? How does it help startups? How from what we've hearing सुबह से, तो I think it's quite revolutionary in the startup ecosystem. जो सबसे बड़ा एक सर दर्द है, which I think all of us dread in our lives, other than Omar I think. जिससे आप पूछें, Other than the पैदाइशी accountants. तो पूरी उम्र जो है ना सर के ऊपर से गुजरा. So, what does metric do? How can startups use it to grow? How can they use it to scale even? अगर वो छोटी टीम से they want to grow their business, वो grow करना चाहते हैं. So where does metric fit in this equation? सही है. So we've been working with startups for a very long time, and we've constantly seen, just as you have, कि accounting और money management, number crunching कितना ज़्यादा मुश्किल काम है.
So हमारा जो idea था ना metric के लिए वो ये था कि we want to create something which is extremely simple. It is the simplest way that you can do accounting for your business, right? And that's how the design for metric came together, right? What is the simplest way? तो हमने जब accounting firm शुरू की तो हम accountants थे, आप हमारे पास आए, हम आपकी accounting करके देंगे, maybe that's the simplest way. मगर उसमें भी जो हम चाह रहे थे ना कि जितनी factors of growth मिले entrepreneurs को वो उतनी तेजी से नहीं मिल रहे थे, for example. And that's when we realized. और दूसरा ये कि उसकी scale potential बहुत कम थी. हम मतलब 100 clients कर लें, 1000 clients कर लें, मतलब हम कमरों के अंदर भर भर के accountants बिठाए जाएं और पूरी बिल्डिंगों की बिल्डिंग accountants की बनाए जाएं, तो शायद हम a few thousand clients कर लें. But if we wanted to reach millions of people जिनका ये मसला है, not just in Pakistan but in other emerging markets also, we had to productize, we had to automate, and that's how Metric came around. Metric is a phone app, and it is the world's most founder-friendly business accounting app. It is made for founders. It is not made for accountants. It is not made for sophisticated founders जिनको accounting पहले से समझ आती है. It is made for a simple entrepreneur जिसने business शुरू करना. हमने तो पहले इसका नाम भी we were trying to name it like first day accountant or something, because हमारे दिमाग में था कि जब आप business शुरू करते हैं ना तो day one पे जो आपका day one accountant है ना, Metric can be your day one accountant, and it will grow with you. So we ended up creating multiple versions, multiple layers of the product, so that as your business and its needs grow, the app can grow. It's a free app. आप उसको डाउनलोड करें अपने फ़ोन पे, आपने बिजनेस कर रहे हैं आप. इट्स वेरी कॉन्वर्सेशनल, बहुत ईजी है इनपुट, कोई उसमें टैब्स नहीं है, कोई वो एक्सेल की तरह के डब्बे नहीं है जिनको देख के आपको डर लगे, घबराहट हो और आप उसको ना करें, बंद कर दें. वो आपसे पूछती है कोई सेल की है, अगर आप डेली के डालना चाहते हैं या पर सेल, अभी मैंने सेल की, मैंने डाल दिया 1 सेल, मैंने शाम को डाल दिया, आज दिन में मैंने 5 किए हैं, मैंने हफ्ते के एंड पे डाल दिया, इस हफ्ते मैंने 12 सेल्स किए हैं. कितनी अमाउंट की सेल्स थी, उनमें कोई रिपीट कस्टमर्स थे, इन सेल्स के अराउंड कोई अगर एक्सपेंस आपने डालने हैं, कोई अगर डायरेक्ट कॉस्ट थी, कोई मटेरियल की कॉस्ट थी, द ऐप आस्क्स यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू एंड यू आर डन. उसको क्लिक किया, मतलब इट टेक्स अबाउट 30 सेकेंड्स और सो कि आपकी एक एंट्री हो जाती है. इसी तरह अगर आपने कोई एक्सपेंस डालने हैं, आपका बिजली का बिल आया, आपने किसी को सैलरी दी, सेम वे एक्सपेंस, वो तो इनकम, मतलब इनकम से भी ज़्यादा इजी एक्सपेंस वाला, तो एक्सपेंस डाला. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड लेयर्स सो दैट इनपुट गेट्स इवन ईजियर. वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इंटीग्रेशंस. वन पिक्चर अकाउंटिंग इज कमिंग अप जिसमें आप बस तस्वीर लेंगे एंड यू आर डन. आपने एक पिक्चर ली एंड योर अकाउंटिंग इज डन, लाइक a picture of your invoice, a picture of a receipt, and your accounting is done. So again, like simplifying it so much कि किसी के पास कोई reason या excuse ना रहे, किसी को डर ना लगे accounting से, और real time में entrepreneurs को पता हो उनकी profitability क्या है, उनकी expense split क्या है, all of the numbers that they need, उनकी customer acquisition cost क्या है, customers की lifetime value क्या है, average revenue per user क्या है. अब ये वो सारी terms हैं जो entrepreneurs को सोचते हुए भी डराती हैं. फिर अगर वो कोई accountant रख भी लें, which for most people they end up not getting an accountant, तो कभी-कभी तो जो junior accountants होते हैं या new accountants होते हैं, उनको भी नहीं पता होती कि ये exactly कैसे calculate करनी है या इनकी importance क्या है, या वो real time में नहीं दे रहे होते. So with this, the health of your business is in your phone, it's in your pocket, and that's it. That's all you need. And interestingly, whenever new startups come to pitch at NIC, या वो पहले मशवरा मांगने आ जाते हैं कि हम pitch में क्या बोलें, so at times they're brilliant at the pitch, but उनके numbers नहीं या होते ही नहीं है या they're all over the place, and that's what we always tell them. Your numbers should be on point, ठीक है. अगर आपका बिल्कुल ही कोई आपको pitch करनी नहीं आती, लेकिन आप अगर judges के सामने and when going forward आप investors के सामने numbers रखते हैं, ठीक है, so numbers don't lie, ठीक है, वो instantly. And similarly, एक तो we have a very good advantage for startups in KP because there are a lot of grants out there, right? Grants भी आप उनके सामने numbers रखें, ठीक है, so it is make it easier for people and investors and all of those people. बिल्कुल, और ये चीजें तो वो पूछते हैं ना, investors भी पूछते हैं आपसे, पूछते हैं आपकी customer acquisition cost क्या है, आपकी basket size या average order value. People will ask you these numbers, and if you don't have them calculated, then you're in trouble. So, and for your own self, for your own growth, you need to know कि ये numbers क्या हैं और इनको आपने use कैसे करना है business. This is absolutely amazing. And इसमें let's say if I have a startup, मेरे पास पिछले मेरे ख्याल से कोई years and years of Excel sheets पड़ी हुई हैं,
So what do I do? Does that translate? Yeah, we help you with data migration. Okay. That's not a problem at all. We have like a whole stream that works on data migration. क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का होता है कि मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, I don't want to lose my data. So we will help you migrate it onto. That's amazing because I don't know कि कितनी entries मुझसे miss हो जाती हैं. Then like मैं upload कर दूँगा and then you forget and they're like, oh why is this space blank? And they're like, चलो छोड़ो. And then when you go to file the tax, वो tax return वाला कहता है कि ये don't make my life difficult. So I think this is amazing. This is brilliant. But one thing you guys had going for you is because you're a great team. Your life partner is your co-founder, right? So कहीं भाग भी नहीं सकता. I think a lot of times it is very difficult for startups over here to look for a co-founder, right? So उसमें what advice would you give कि क्या होना चाहिए? एक तो vision share करें, वो चीज़ें हैं. लेकिन a lot of times founders are reluctant as well कि यार मैं क्यों share करूँ किसी के साथ, ठीक है? So what is the right method to look for a co-founder? I've even seen ads on LinkedIn as job posts looking for a co-founder, right? So again, because a lot of times everyone can't cover everything. We get a lot of founders जो कि techies हैं and उन्होंने उस technology से business को manage करना होता है, right? Maybe just like you guys, ठीक है? But उसकी management की skills कोई नहीं है या कोई hardcore sales का product है, right? And the founder can't sell, so they probably need someone to come on board. So what would your advice be कि how is the best way to look for a co-founder? So इसमें एक दो चीजें. So I think I personally think there are two types of co-founders. One type is that co-founder जो आप बिल्कुल early on आपके साथ on board आता है. And that person basically shares the vision or shares the passion. और बेशक वो आपके सर्कल में हो, सर्कल से थोड़ा बाहर हो, थोड़ा सा अपने नेटवर्किंग की आपको मिला, but they are experienced or passionate about what you're building yourself. उस co-founder में obviously you also look for complementary skills. But I think उस co-founder में complementary skills थोड़ी सी आप उसको कम value दे दें, because just having someone who cares about something as much as you do, and you do need a co-founder for help, like they will have some skills that are complementary, but they're the sort of people जो दो co-founder वो shared vision हो और वो मिल के काम करें और जो सारी चीजें करनी है एक बंदे के लिए जो उसको आती भी है, that is too much for one person. It can be sort of divided. So एक तो वो हो गया co-founder. Then you probably need another type of co-founder which is just based on यार हमें ये चीज नहीं आती, technical expertise, हमें ये करना है. So if you're not a techie, you will need a CTO. You're building a tech product. If you're not a techie, आप outsource किसी point तक ही लेके जा सकते हो. You will need a CTO at some point. If you're not a good fundraising CEO or fundraising founder, and you're in a VC business, which is a business of fundraising, then well, you won't be able to fundraise. So आपको किसी point पे वो चाहिए. उनकी फिर the main difference between is how much sort of parts they play in terms of how much equity they get in the business और उनके क्या role exact होते हैं. तो initial जो founders होते हैं, I think वो तो it's really hard to like post a job on LinkedIn and get that sort of founder initially. So it's more around again increasing your circle, increasing your surface area, you know, discussing with friends, family, whatever people, old friends, किसी से यार वो भी ऐसे काम कर रहे हैं उससे बात कर लो, and you can probably get someone with a shared vision. And then आगे I think you know it's easier to get a technical, I mean CTO बहुत मुश्किल है, CTO पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, but generally then you're just judging on skills, right, and experience. अगर CTO होगा तो कोई experience होगा किसी particular चीज में, and they will handle the you find an expert and you convince them that this is something worthwhile for them. So it's similar with us, right? हमारा ठीक है, हमें बहुत surface area increase करने की जरूरत नहीं पड़ी, साथ ही co-founder था, but we also went for like the third co-founder which was the CTO, because none of us are from a tech background, और हम वही outsource करा के build करा रहे थे, but we didn't really know कि ये सही हो रहा है नहीं हो रहा, practices follow हो रही हैं, और किसी point पे वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि we will need, so better to get a CTO early on than later. So when looking for a co-founder, I think सबसे पहले ये दो आपने वो करना है कि यार अभी शुरू हो, क्योंकि
मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में जब कोई टेक्निकल को-फाउंडर लाता है ना, if you give them too much equity, they might not be that invested in the business क्योंकि उनका वो पैशन नहीं था, they just thought यार कि मजे की चीज है, ये कोई मजे की चीज है, equity मिल रही है तो मैं आ जाता हूँ. So applications for our 10th cohort are open. तो आप दोनों से मैं चाहूँगा कि what will you advise the aspiring entrepreneurs who are going to apply to NIC's program कि वो क्या करें अपने pitch में, अपने ideas में. They already obviously have ideas, लेकिन what could set them apart? Because again, as we know, in all NICs ये एक misconception होता है कि हमने इसको select किया, इसको reject किया. It's an open competition between everyone, right? 500 people apply, the top 15 जिनका सबसे refined होगा idea, जिनके again सबसे numbers अच्छे होंगे, so सबसे पहले मेरे ख्याल से they should download the metric app. Oh, absolutely. Make sure your numbers are well done. So what would your advice be to these aspiring entrepreneurs कि वो क्या ऐसा करें that would set them apart from the competition and would make it easier for them to join NIC's program? So I think numbers तो are definitely a part of it क्योंकि मैंने खुद NICs में different NICs में judge किया हुआ है जो applicants होते हैं उनको, और numbers तो barely we see them barely anywhere, right? वो pitch का part ही नहीं होते almost, it's like a secondary thing. ये बाद में सोचेंगे कि financially does this make sense or not? But also I think just if you want a higher chance of succeeding and getting into the program, try and see if you can speak to a mentor early on, like while you're crafting the वो मतलब वो आप 4 दोस्त बैठ के खाली ना लिखें और वो रात को बैठ के आपने की और सुबह वो कर देगा. Put some effort into it, right? Because this isn't just like a free cool space or a free cool thing. Stop treating it like a free cool opportunity. No, it's going to take a few months or maybe a few years of your life, and you need to commit to it and you need to prepare for it the right way. And the right way is by giving it the respect it deserves, right? जब आप कोई काम करते हैं तो उसको respect देनी चाहिए. जब आप काम को respect देते हैं तो वो आपके लिए काम करता है, So you need to prepare for it a little bit. कोई mentor ढूंढें, किसी से advice लें. अब तो startup ecosystem के इतने लोग हैं, they're all very happy and willing because this will increase your chances of succeeding at this particular idea later on. So don't make it like a by the way kind of thing, Don't do it as an afterthought. Don't do it like we do university के projects जो आखिरी दिन बैठ के करते हैं और वो group में जो एक मेहनती लड़की होती है वो सबका काम करती है और बाकी हम सारे फालतू के grades उठाते हैं वहाँ से ना. Market research में 10 लोगों से पूछ के फिर multiply by 10 वो ना करें. So हाँ बिल्कुल what Meenah said 100%. If there are a couple of specific things when you're pitching any competition, and I think it is almost just as important for an idea stage company to be pitching like that versus even if it's like a Series A founder. The most important thing is answering 3 basic questions: why you, why this, and why now. Okay. And why you is always the most important. आप जो भी काम कर रहे हो, especially जितना early stage होता है, the only data point, the only solid data point anyone judging or anyone looking to invest has is the person in front of. That is the only solid thing they can see. बाकी तो सब हवा में. क्या चीज़ नजर आ रही है ये बता. Yes. So what sets you apart first? अपना usually मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि usually लोग pitch आते हैं तो problem बताते हैं और अपना idea बताते हैं. Like you said, idea centric बहुत होते हैं. Obviously putting in those numbers is really important. उससे भी आप समझ आती है कि यार आपको clarity है. इस बंदे को even if those numbers are still obviously based on assumptions. But at least it shows that is this person knows what this person is supposed to be doing, right? So instead of keep making your pitches idea centric, make the pitch you centric. That why you should be selected in this incubator because you have the potential of doing great things. On the flip side, there are actually startups जो कि 3-4 साल से market में हैं, and we see them from a lens कि हमें लगता है if they get incubated, इनकी growth एकदम बहुत बढ़ जाएगी. They'll get access to investors, network, सारा का सारा. On the other hand, आप उनसे पूछते हैं वो कहते हैं नहीं हमारे clients तो कहेंगे ये तो छोटा startup है, अभी incubate हो रहा है. So what are your thoughts on that mindset? Because I think taking an idea stage and making that grow is much harder than taking something which is in revenue और उसको आप बहुत फौरन से उसको आप scale करा सकते हैं.
सो इस पे मैं सिर्फ ये कहूँगी कि NIC कराची जब शुरू हुआ था ना तो उनके पहले कोहोर्ट में था बाइकिया, जिसके फाउंडर हैं मुनीब मायर, और मुनीब से ज़्यादा मंझा हुआ एंटरप्रेन्योर शायद ही, और बिजनेसमैन, नॉट जस्ट एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन शायद ही मैं जानती हूँ उस टाइम पे, तो स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान एंड इवन नाउ, राइट? एक्सट्रीमली स्मार्ट, एक्सट्रीमली शार्प, एक्सट्रीमली नेटवर्क्ड, एक्सट्रीम ज़बरदस्त, राइट? ज़बरदस्त. And he obviously had no such ego qualms कि जी मैं अगर incubation में चला गया तो लोग कहेंगे जी मुनीब को incubation की ज़रूरत है. You would see Muneebs in like pitching 101 competitions. Yeah, because that's what, अगर आप अपने ego के साथ business कर रहे हैं ना तो फिर आप पहले गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ego की क्या बात है, और अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो आप उनको समझाएं. And I think people will be impressed with your vision. अगर आप, if you do things that are strategic, right? There is no शर्म and there is no वो इनकी जी मेरा ego hurt होगा कि अगर मैं आप किसी प्रोग्राम में ego hurt क्या, उनको realize करना है ये actually is still good for their start. This is good for their company. This is good for if something is good for your business, you should do it. But वही unfortunately वही बात होती है कि लोग आमतौर पे सोच रहे हैं हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, हमें नहीं जरूरत. और सैड बात ये होती है कि जो लोग इस तरह सोचते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत होती है. सो ये हमने देखा है, हम भी इसी इकोसिस्टम में, वही बात है, बहुत सालों से लोगों को देख रहे हैं, और हमने यही देखा है कि जो लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त लर्निंग के लिए तैयार होते हैं, जो क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार होते हैं, जो फीडबैक लेने के लिए तैयार होते हैं अबाउट देयर बिजनेसेस, दे आर द वंस हु गो द फर्देस्ट. Absolutely. So thank you so much, Omar. Thank you so much, Meenah, for joining us. And it was a really wonderful conversation. I hope all of you guys enjoyed it as well. Do check out the Metric app. Download it. It's on the App Store and iOS as well. Not on iOS. It's not on iOS. Just on the app. So iPhone वाले थोड़ा इंतजार कर लें. Yeah. So the web app is coming out in August, and you can download it from the App Store. Also apply to NIC's 10th cohort. Applications close on 31st of July, and we wish you all the best. I hope this session was useful to you guys. Take care. Allah Hafiz.